great nations. Now we mark another milestone in our bilateral cooperation as we develop opportunities in the mining and mineral sectors. Going back to the mining industry, it has been driving force behind the economic development of many nations worldwide. Mineral resources have played a crucial role in trade promotions, job creation, and overall economic growth. The mineral sector is a treasure trove of opportunity, and we are determined to seize them by formulating new regulatory standards, adapting world ESG practices, utilizing modern technologies, and investing in infrastructure and human resources. Many macro factors are driving the need for new mining jurisdictions. First, the future will be mineral intensive. Demand is high and growing for the minerals needed to drive the net zero. Overall, mineral production must increase at least sixfold to meet the demand for clean energy technologies. New jurisdictions are the answers. Second, green metals will be in the highest demand. The International Energy Agency estimates the copper demand to grow by 20 times in 2040. Nickel demand could grow by 40 times, and lithium demand could grow by 40 times. So we must invest in underexplored new jurisdictions. Third, the world's fragile mineral and metal supply chains will continue to be under pressure. New jurisdiction will help ensure more resilient supply chains. The mineral-rich regions, which stretch from Africa to Central Asia, including Pakistan, that we call the super region, has tremendous potential to become a game changer in developing these resilient and responsible mineral value chains and providing the minerals the world desperately needs. Pakistan is blessed with vast mineral resources. Assets like the Titian Belt, stretching from Europe to the Pacific Ocean, is one of the most critical orogenic belts on Earth and is home to various mineral deposits, including copper, gold, silver, lead, and zinc. These deposits have been mined for centuries and will continue to be an essential source of economic development for Pakistan. Strategically located at the crossroad of South Asia, Central Asia, and the Middle East, Pakistan enjoys a unique advantage in regional trade and connectivity. This advantageous position can serve as a gateway for the regional and international markets, further enhancing the growth potential of the mineral sector in Pakistan. This potential is supported by Pakistan's diverse range of industrial expertise, from textile, agriculture, food processing, chemicals, cements, steel, and many others that contribute to Pakistan's economy. Pakistan is also gifted with a well-educated, talented, hard-working, and committed workforce who are making significant contribution to their home country and the global economy as well. In Saudi Arabia, 2.7 million Pakistani brothers and sisters who live and work there are making a great contribution to our economic development, which is led by Vision 2030 that is transforming Saudi Arabia into an economic powerhouse, building on the three foundations: a vibrant society, a thriving... न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज कॉम की सोच। Decipher with Abdul Basit. हिंदुस्तान ने कोई 250 फेक वेबसाइट, झूठी वेबसाइट्स और थिंक टैंक्स बनाए हैं जिसका
वाहिद मकसद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, नफरत फैलाना। अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों अहम है, क्या अहमियत है पाकिस्तान की? अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। जो चाइना के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत और ज्यादा है। लोगों का ख्याल यही है कि अमेरिका तो पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना चाहता है। पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो सबके लिए अहमियत की हामिल, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, कि किसी भी मुल्क की इंस्टेबिलिटी दुनिया के किसी कोने में अगर हो तो उसके असरात दूर दूर तक जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मजबूरी कर्जे कितने हैं इस वक्त? पाकिस्तान के जो टोटल कर्जा है 73,000 अरब रुपया, $125 बिलियन आपका बैरूनी है और बाकी 175 अरब डॉलर तकरीबन आपका जो है वो अंदरूनी कर्जा है। एक आम आदमी पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है। हमने कर्जा लेके उसे इस्तेमाल सही नहीं किया, खर्च कर दिया, बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर नहीं किया। सिर्फ ABN न्यूज पर। मौजूदा माशी सूरत हाल हुकूमत के लिए दो धारी तलवार से कम नहीं है। देखिए, हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान में अब माशी तौर पर इरेलेवेंट हो गई है। असल चीज तो है कि हमारे मुल्क में जो महंगाई है वो कैसे कंट्रोल होगी। जिस हुकूमत ने चंद माह के बाद इलेक्शन में जाना होता है वो मजबूर होती है कि वो पॉपुलर स्टेप्स ले। सब्सिडीज हैं वो टारगेट तक नहीं पहुंचती और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो उतना नहीं होता। नहीं साहब, आपको लगता है अवाम को मुतमईन कर लिया गया और अक्टूबर ही में इलेक्शंस में जाया जाएगा? पीपल्स पार्टी जो फर्मली बिलीव करती है इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। देखिए सवाल से आगे अलीना शिगरी के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। आपकी शख्सियत की पहचान, फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। सागदार कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, हमारे पास एसेट्स बहुत मौजूद हैं। हम मुईशत पे सीरियस ही नहीं है, एक दूसरे की सिर्फ टांगें खींचते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP, इनके लिए इंतखाबी जमीन तंग कर दी गई थी। 2018 में भी हमारे साथ ही हुआ था और हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। हालात जो हैं वो मुश्किल हैं। क्या ये PDM ने हालात बनाए? रियासत के साथ जिसने भी मिलिटेंसी की है उसको फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ा। खवातीन के साथ जो ट्रीटमेंट हुई है अनफॉर्चुनेटली वो हमारी जो एक ट्रेडिशंस हैं उस ट्रेडिशन से मैच नहीं करते। हालात बदल गए हैं लेकिन नहीं बदले और मुझे बदलते हुए नजर भी नहीं आया। कोई एक मौका ऐसा जिसमें आपको ये लगा हो कि नहीं मैंने दुरुस्त फैसला नहीं किया तहरीक इंसाफ? मैं वजू में हूँ, मैंने बहुत सही फैसला किया। देखिए डिबेट एट 8 ईसा नकवी के साथ पीर से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। आपकी शख्सियत की पहचान, फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। इसीलिए तो मैं कहती हूँ लाइफ के हर ओ के लिए प्रियो। आप देख रहे हैं ABN न्यूज, कौम की सोच। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। कहते हैं जन, जर और जमीन के लिए इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। मुल्ज़िम इस कदर शातिर था कि वाक़ये के बाद अस्पताल में भी वरसा के साथ साथ फिरता रहा। इनको इंसाफ कौन दिलाएगा, कौन इनकी दाद रसी करेगा? महंगाई ने जहां आवाम की कमर तोड़ दी है, वहीं लोगों ने शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्या है कि पॉलिसीज तो मुरत्तब की जाती हैं, इस्लाहात भी सामने आती हैं, कानून साजी भी की जाती है, मगर हमारे मसाइल जूं के तू हैं। देखिए प्रोग्राम जुर्म कहानी हर इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर।
हम IMF के प्रोग्राम में हैं, सबको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी। पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान इतलाक फौरी तौर पर हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक कमिटमेंट है, सबको पता है स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमत ने जाते हुए मुआहिदों को पूरा नहीं किया। गुज़िश्ता दिनों आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत इजाफे के बाद 273 रुपये 40 पैसे हो गई। पाकिस्तान मिनरल्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, समिट का मकसद बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और मादनियात के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। मादनियात के इनकलाब से मुल्क में रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे। मादनियाती इनकलाब से मुल्क की बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक होगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल आज जवाब देंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के पेश न होने पर समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा। चेयरमैन PTI ने नैब कोर्ट में पेश होना है, कुछ वक्त दिया जाए। मुआविन वकील की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI को आज 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर इंक्वायरी का रदम करार देने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर एतराज दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। खुशहाली का नया दौर आएगा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमाकारी की गई। लाखों अफराद को रोजगार मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा स्पेशल इकनॉमिक जोन बनेंगे। खुशहाली का नया दौर आएगा, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म हीली फेंग का पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ाने का आज़म, कहा पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया और सनती तरक्की की राह हमवार की। इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में ताउन के इजाफे की जरूरत है। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सदर शी जिनपिंग का CPEC के आगाज की 10वीं सालगिरह पर तहीनेती पैगाम, कहा दोनों ममालिक खित्ते के अमन खुशहाली के लिए मज़ीद खिदमत सर अंजाम देंगे। CPEC दोनों ममालिक के दरमियान 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। मंसूबों की बदौलत पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिली। CPEC की मज़ीद कामयाबी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेल मंसूबे ML1 समेत मुफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के नायब वज़ीर आज़म हीली फेंग को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। ईवान सदर में मुनअक़िदा तकरीब में वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। सानिया बाजोड़ पर वज़ीर आज़म का CPEC की 10 साला तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चर शो भी मनसूख कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की आज़म का इरादा।
पाकिस्तान आर्मी तरमीम बिल 2023 सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। बिल के मुताबिक सरकारी हैसियत में कौमी सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का अफशा करने वाले गैर मजाज शख्स को 5 साल तक कैद की सजा होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निमटा जाएगा। आम ओहदे पर तैनात अफसर रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। तुर्किया के नायब सदर सादत यलमास आला सतह वक्त के साथ आज कराची पहुंचेंगे। नायब सदर तुर्किया कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। कराची में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम, रेड जोन में दाखिले पर पाबंदियां। ओआईसी के स्वीडन, डेनमार्क में बार बार कुरान की बहरमती की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन के कमीशन के साथ बातचीत के लिए सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में वफ्द भेजने का फैसला। जद्दा में वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल का गैर मामूली इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की वर्चुअल शिरकत। बिलावल भुट्टो के ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने का मुतालिबा। ओआईसी का स्वीडन और डेनमार्क के हुकाम से ऐसी कार्रवाइयाँ दोबारा होने से रोकने के लिए इक़दाम का मुतालिबा। आलमी बरादरी से ऐसे इश्तियाल अंगेज इक़दाम के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया गया। बिलावल भुट्टो का डैनिश मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कुरान पाक की बेहुरमती पर इज़हार तशवीश। बिलावल भुट्टो ने डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामोफोबिया पर मबनी वाक़यात को बंद करने पर जोर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? इत्तेहादियों को 2 दिन में नाम देने की डेडलाइन। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में असेंबली तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत की गई। निगरान सेटअप के लिए इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। बाजोड़ धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। जख्मियों की इयादत की, इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान कहते हैं सफाकुर मुल्क का अमन खराब करने की कोशिश की। अमन के लिए मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जामिया अजहर के शेख अहमदुल तैयब की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। जहाँ बहक होने वालों के खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की सेहतियाबी की दुआ दी। शेख अहमदुल तैयब ने अपने बयान में कहा, मजलिस हुक्मुल मुस्लिमीन हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करती है। ऐसे अमाल तमाम मज़ाहिब की तालीमात, आसमानी कुतब और शरीयत के अहकामात के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद की जाए। दरियाई जेलम में मंगला के मकाम पर 4 से 6 अगस्त के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 70,000 क्यूसिक और अखराज 63,000 क्यूसिक है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल है। तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। पंजाब की मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशों की पेशगोई। PTMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2 भारतीय नौजवान सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आ गए। दोनों नौजवानों को पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों की शिनाख्त रतनपाल और हरविंदर सिंह के नाम से हुई। इससे कबल भी एक शख्स सैलाबी पानी में बहकर पाकिस्तान आया था, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। सिविल जज की एहलिया के तशद्दुद का शिकार बच्ची की हालत बादस्तूर तशवीशनाक। डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम इलाज में मसरूफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिजवाना की इयादत। घरेलू मुलाजमा की वालदा ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बेईमाना तशद्दुद और जुल्म के बारे में बताया। वज़ीर आला की रिजवाना को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला का टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी ने बच्ची की सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में शहबाज शरीफ को आगाह किया। शहबाज शरीफ की मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी।
मोहसिन नकवी का बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बाकायदा दरख्वास्त देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बेटियां सबकी साझी होती हैं, जामिया तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लसबेला हादसे को 1 साल मुकम्मल। 2022 को लसबेला के मकाम पर पाक फौज की जानिब से मुश्किल में फंसे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के बाद हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनी, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सर फयाज शहीद हो गए। सिंध भर के निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस 2 माह की छुट्टियों के बाद दोबारा खुल गए। दोस्तों को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। तातीलात के बाद पहले दिन तालीमी इदारों में तुलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। पब्लिशर्स और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में तनाज़ा के बायस कराची की मार्केट्स में दरसी कुतब नायाब। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब कल नमाज फजर के बाद होगी। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फस्सी खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को आब जमजम, अर्के गुलाब और खुशबू से धोएंगे, जबकि खाना काबा के फर्श को भी आब जमजम, अर्के गुलाब और ऊद के इतर से धोया जाएगा। रवा माह में 2 सुपर मून होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। आज चांद ज़मीन के इंतहाई करीब और मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन नजर आएगा। एक माह में 2 बार फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है। मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने हिंदुओं को भी लपेट में ले लिया। हरियाणा में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुपों में तसादुम, 2 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तसादुम शवाहिद प्रशीद और बजरंग दिल के पैरोकारों के दरमियान हुआ। मजहबी रसूमात के दौरान पेश आया। मुश्तइल इंतहा पसंदों ने दर्जनों गाड़ियों को नजर आतिश कर डाला। अमेरिका का तालिबान से इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर पॉलिसियां वापस लेने का मुतालिबा। दोहा में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुलाकात का एलामिया जारी। अमेरिका का खवातीन और अक़लियतों पर पाबंदियों के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार। अमेरिकी हुकाम ने अफगान अवाम की हिमायत में एतमाद साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर की निशानदही की। कौमी स्क्वाश हीरो हमजा खान का ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जितवाया। जान शेर खान ने आखिरी बार 1986 में वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता था। वज़ीर आज़म ने शानदार कारकर्दगी पर हमजा खान को 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। दोनों टीमें पहले वनडे में 22 अगस्त, दूसरे मैच में 24 अगस्त और तीसरे वनडे में 28 अगस्त को मद्दे मुकाबिला आएंगी। पाक अफगान सीरीज के तमाम मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी एशेज सीरीज बराबर। 5वीं टेस्ट में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त। क्रिस वोकस ने 4, मोइन अली ने 3 और स्टेवर्ट ब्रॉड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उस्मान ख्वाजा दूसरी इनिंग में 72 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने करियर के आखिरी टेस्ट में मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 167 टेस्ट मैचों में 604 विकेटें हासिल की। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं।
लंका प्रीमियर लीग के मैच के दौरान ग्राउंड में बिन बुलाए मेहमान की एंट्री। मैच के दौरान सांप के ग्राउंड में आने से खेल रोक दिया गया। सांप बल खाता हुआ ग्राउंड में रेंगता रहा। खिलाड़ियों समेत तमाम अफराद हैरान रह गए। Can I come to your house tonight? Sure. Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could be press until this doll is back in a box. Even if nobody. हॉलीवुड फिल्म बार्बी की पंजाब में नुमाइश होगी या नहीं, फैसला आज होगा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर फिल्म सेंसर बोर्ड के हुकाम आज फिल्म को दोबारा रिव्यू करेंगे। Great to see you again. That's what's been happening. Pulled through time. Between the past and the present. Hello? If what I saw is true, there's nothing to stand between this world and utter destruction. Only one way to find out. A little good old-fashioned legwork. Listen, we have different styles. दुनिया को बचाने की जंग, एक विलन कैसे हीरो बनेगा। लोकी के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। नया सीजन अक्टूबर में पेश किया जाएगा। मेरी पूरी फैमिली के कपड़े धुलते हैं सिर्फ प्रियो से, इसीलिए तो मैं कहती हूँ लाइफ के हर ओ के लिए प्रियो। नौजवानों के लिए आला तालीम सिंध हुकूमत का मिशन, जिसके तहत सूबे भर में नई यूनिवर्सिटीज का इजाफा किया गया है, जिनमें शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर, सखर IBA यूनिवर्सिटी, बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सखर, ओरोड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड हेरिटेजेस सखर, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीइज्म एंड मॉडर्न साइंसेज भिटशा, शहीद अल्लाह बख्श सुमरो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड हेरिटेजेस जामशुरू, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी शामिल हैं। आला मयारी तालीम हमारा अज़्म, खिदमत में सबसे आगे सिंध। जब तक आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे या वैक्सीन नहीं पिलाएंगे, ये ख़तरा मौजूद रहेगा और बच्चों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक बार बार पोलियो के कतरे पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। This public service message is brought to you by ABN News. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। मैं हूं सुमेरा सलीम और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने जाने से पहले अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। वजीर खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 19 रुपए 90 पैसे महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई है। वज़ीर खजाना का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। आपको बताएं, हुकूमत ने जाने से पहले आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। IMF के प्रोग्राम में है, सबको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए
और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। उनका कहना है कि हुकूमत ने जाते जाते भी आवाम को नहीं बख्शा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का सुनामी आएगा। हुकूमत ने जिंदगी आजाब बना दी है। इसी बारे में तफसील से आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। स्टेट पेट्रोलियम ऑनरेबल चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर and our brother from Saudi Arabia, Engineer Khalid bin Saleh Al Mudaffir, Vice Minister of Industries, Secretary Petroleum Captain Mahmood, and Dr. Mark Bistro, and our brother from Azerbaijan, Kamal Abbas, Deputy Minister, Excellencies, Honorable Federal Ministers, Chief Ministers, and very eminent investors, not only from Pakistan but from our friendly countries and brotherly countries, eminent journalists, young entrepreneurs, business houses, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good late morning. I think today is a great day for me and obviously for all of us. Here is a galaxy of people belonging to various walks of life, and you can tell from their faces that they have been deeply involved and absorbed throughout the proceedings of today. I will not go into repetition. A brilliant presentation was made by Dr. Musaddiq Malik and a very wonderful speech by our brother from Saudi Arabia. Captain Mahmood made his points very well, and Mr. Mark Bistro spoke in a very frank manner and a very heartwarming and heart-touching speech from the Chief Army Staff. So I will just stick to a few points because there is hardly anything more I can add on to their brilliance and extremely well articulated points. As it has been said that this has been a journey of 75 years, it has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. $6 trillion. Imagine $6 trillion and yet where we stand today. I will just make a few points to explain my point of view. For example, Pakistan Steel Mills was established back in 70s with
Russian sport, and its entire raw material was always imported. There was, and there is, and there shall always be Kalabagh iron ore, which was probably touched and then forgotten. And there is no question about it that whatever iron content this Kalabagh iron ore had, today's technology and today's expertise could have and can easily convert into a raw material for steel plants in the shape of pellets or in other forms. Ricodec, another case in point. Without going into details, there was a penalty of $10 billion imposed on Pakistan. And God forbid, had this been imposed upon us and had we been forced to execute it, we would have lost our entire foreign exchange and yet not have been able to meet this challenge. Look at Tharkol, the largest or one of the largest coal deposits around the globe. Alhamdulillah, today one can say with a sense of pride and achievement that this has been now converted into wealth for Pakistan. But where were we as a nation for the last 75 years? Were we beholden to certain cartels or not able to explore this huge wealth of Pakistan for the well-being of the people of Pakistan for certain precious political reasons, or what? Is a question to be looked into deeply. Look at Cheniot iron ore, another deposit which belongs to the poor people of Pakistan and was subjected to worst kind of pilferage and corruption and corrupt practices. I will not mention names here because that's not the intent and purpose of this meeting. Because today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. But let me say a couple of things about Cheniot iron ore. It was the project, the entire project was handed over on a platter to a Pakistani residing in overseas, relative to one of those very influential people at that point in time, had no credentials, had no business history, and there was no bidding. It was simply handed over to him. And then what happened was that there was government changed, the matter was taken, the contract was rescinded, the matter went to the court of law. It took years, and finally the court of law decided that this was nothing but loot and plunder of the resources of the poor people of Pakistan. And then the matter went to Supreme Court, and that gentleman withdrew his application or petition or appeal, and nothing happened.
NAB was nabbing only those who were opposed to the government of the day, and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. So, ladies and gentlemen, this is the story, heart-wrenching story of our journey of 75 years. You cannot blame anybody else except our own self. Those governments, those who are given the responsibility of serving the cause of the people of Pakistan. So this is how we have wasted time, resources and energies which should have been dedicated for the well-being and prosperity of the people of Pakistan. Today is a day, I would say, that these wonderful speeches, presentations now have to be converted into action. Because certainly in the past, many such events were organized, speeches were made, papers were read, presentation made, and when it came to the question of implementation, it was what I told you a minute ago, how a record was derailed, Tharkol, and so on and so forth. And I think, ladies and gentlemen, believe me, and this I'm saying without any fear of contradiction, that if we decide today that what we have seen in this presentation, what has been spoken about, if this can be converted in letter and spirit, then I'm telling you, this nation will find its lost place by the grace of God in the next few years, through hard work and through untiring efforts. And that is why I want to come to the point now. But before that, I would like to thank my brother, Minister from Saudi Arabia, for his heartwarming comments about our friendship, our brotherhood, our fraternity, which is absolutely beyond any ray of doubt. Saudi Arabia and Pakistan are two brotherly countries and have always stood by each other through thick and thin and supported the cause of both the countries at every forum and at every moment. The most recent example is your support to Pakistan to achieve IMF program. You contributed $2 billion to meet the gap, which was so vital for Pakistan's survival. And my brother, on behalf of the people of Pakistan and my government, I'd like to thank you and convey my sincere gratitude to my brother, His Royal Highness Mohammed bin Salman, for his wonderful cooperation at this hour of need. Thank you very much. आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 70 की दिहाई में रूस के इश्तराक से पाकिस्तान स्टील मिल का क़याम अमल में लाया है। उसने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा